Let's turn our attention to the other big story we're tracking on NDTV. Widely regarded as the first family in Mumbai political circles, cousins Uddhav and Raj Thackeray, driven apart by a 20-year family feud, reunited in June, as you know, with the Marathi versus Hindi language row. They took a step closer to that comeback on Monday, though. Sources tell NDTV that Uddhav Thackeray and Raj Thackeray, cousins and rivals for over 2 decades, have reached a seat-sharing agreement for the upcoming BMC polls. According to our sources, Uddhav Thackeray's Shiv Sena will contest 157 of the BMC's 227 seats, while Raj Thackeray's MNS will contest the remaining 70. Now, should the deal whispered to NDTV hold, it will mark the first time in those 20 years that the 2 biggest members of the clan will contest an election as allies instead of enemies. For Uddhav Thackeray, the picture is particularly grim because his Shiv Sena managed to win just 9 seats in the Panchayat polls, while Eknath Shinde's BJP allied Sena bagged 53, delivering a second consecutive defeat and confirming that the undivided Sena's traditional vote base has pivoted, decisively towards the BJP's Hindutva model. In last year's assembly elections, Uddhav Thackeray's Sena won just 20 seats. For Uddhav Thackeray, the BMC election may now be a watershed moment. A 3rd straight electoral defeat could prove terminal, potentially handing control of the political legacies permanently to Eknath Shinde and Ajit Pawar. Maharashtra's political battle lines are being redrawn, and for the old guard, time may be running out. Here are all the crucial political reactions you need to listen to. संजय राउत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जैसे कि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनको ये तो समझ में आया होगा कि ठाकरे नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, कोई सरनेम पे वोट नहीं मिल रहे हैं। वोट मिल रहा है तो सिर्फ अच्छे काम की वजह से जो एकनाथ जी शिंदे ने ज़मीनी स्तर पे किया। आगे से तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे। हमने कभी लोकल बॉडी में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। जिस नगर पालिका लोग का बजट 30 करोड़ है, वहां 150 करोड़ खर्चा होता, 150 करोड़ खर्चा होता। कहां टिक पाएगी सामान्य जनता? कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग? मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है, तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी? कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस खुद अपने आप को आत्मचिंतन करेगी कि जैसे बिहार हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, बाकी राज्यों में जो हुआ वही हाल मुंबई में भी होगा। My colleague Abhishek Avasthi has been tracking all that's unfolding behind the scenes for us. He joins us at the moment with all the details. Abhishek, we are given to understand that the seat share deal is done. The Thackeray brothers are closer to their reunion. But can we expect a formal announcement within the next couple of days, perhaps today or tomorrow? Definitely, also last night there were talks for last couple of seats are pending. And what we understand from our sources that Raj Thackeray has insisted that until the seat sharing arrangement is clear, you can see a clarity is there on the seat sharing arrangement, we should not go ahead for a bigger announcement. So definitely we have seen. All right, we seem to have lost that line with my colleague Abhishek Avasthi, but he'll continue to track all that's unfolding as far as Battleground Mumbai is concerned. The Thackeray brothers are expected to reunite. Whether a formal announcement is expected within the next 24 hours, that remains to be seen.